लोग कहीं और से जुड़े हैं, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स इस चैनल के इंडिया के बाहर से ही जुड़ते हैं अक्सर मेरे साथ हर हफ्ते। तो वेल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी हो आप। पहले एक सिप कॉफी पीता हूँ, फिर हम कल के मैच लेकर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि द स्ट्रीम इज कॉल्ड कॉफी एंड क्रिकेट विद मी जेमी। दिस कॉफी माइट बी द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रीम, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हम फिर से एक बार भारतीय टीम को लेकर बात कर रहे हैं एक हार के बाद। अगेन अ नैरो लॉस। पहला मैच सिर्फ 4 रन से हारे वो। कल दोस्तों 2 विकेट से वेस्ट इंडीज ने हराया इंडिया को। और जो सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है आज, क्योंकि बहुत सारे इंडियन फैंस, कुछ हमारे मीडिया से जुड़े दोस्तों ने भी कहा है कि वेस्ट इंडीज की टीम खराब हो चुकी है। दे दे डोंट प्ले फॉर क्रिकेट, द आइलैंड शुड बी, द टीम शुड बी डिसबैंडेड एंड सेपरेट टीम्स फ्रॉम द आइलैंड शुड बी कम। देखिए, आई थिंक, और मैं भी काफी क्रिटिकल रह चुका हूं वेस्ट इंडीज की ओवरऑल डिक्लाइन का। बट आई थिंक वेस्ट इंडीज ने लगातार 2 मैच में ये साबित कर दिया कि अभी खत्म नहीं हो चुकी ये टीम, अभी काफी है इस टीम के अंदर। बट एज आई सेड, हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज फॉर विनिंग दिस मैच। लेकिन दोस्तों, जहां पे इंडियन टीम के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे हम इस लाइव स्ट्रीम पर, ब्रॉट यू बाय डैफा न्यूज। मैं आप सभी लोग के सवाल भी लूंगा, या कोशिश करूंगा सारे सवालों का जवाब देने का। But I think the two main takeaways, or three main takeaways for me from yesterday's match is: one, टारगेट सिर्फ 153, विकेट इतनी मुश्किल नहीं थी जितने की पहले मैच में हमने देखा। यू जस्ट डिड नॉट गेट इनफ एक्सपीरियंस बैट्समैन गेटिंग स्टार्ट्स। तिलक वर्मा ने पहले मैच में डेब्यू पे 39 मारे, कुछ 21-22 गेंदों में। उस दिन में, उस हार में, उस नैरो हार में वो आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज दिखे, युवा खिलाड़ी है डेब्यू पे। और कल के मैच में दोबारा, यानी कि लगातार सिर्फ अपना दूसरा मैच खेलते हुए, तिलक वर्मा अगेन लुक लाइक योर बेस्ट बैट्समैन। अनदर बैड मैच फॉर शुभमन गिल, another bad match for Suryakumar Yadav, another struggle for Ishan Kishan, another struggle for Hardik Pandya. And the main thing I want to talk about in this brief segment regarding the batting is Sanju Samson. अब इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं, ब्रॉट यू बाय डैफा न्यूज, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं काफी समय से, तो आप जानते हैं कि संजू सैमसन को लेकर हमेशा जब भी उनका नाम आता है, मैं संजू सैमसन द वनडे बैट्समैन और संजू सैमसन द T20I बैट्समैन को अलग कैटेगरीज में डालता हूं। संजू सैमसन द वनडे बैट्समैन, और ये मैं आपके लिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर ये गलतफहमी है किसी के साथ, डू नॉट डू नॉट कंपेयर द टू एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द टू। ये कल का मैच दोस्तों, ये संजू सैमसन का 19वां मैच था। 19 मैच के बाद इनकी बैटिंग औसत 18 का है, सिर्फ 150 है। और जो इनकी शुरुआत थी T20I करियर में संजू सैमसन को, और मैं जानता हूं कि 2015 में उन्होंने पहला मैच खेला T20, फिर 2020 तक उनको वेट करना पड़ा, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज एनीमोर इन रिगार्ड्स टू संजू सैमसन द T20 बैट्समैन। आई थिंक yesterday's dismissal, terrible shot in a tough situation, it just showed why I feel the team should not be putting Sanju Samson into the T20I lineup anymore. मैं आऊंगा वन डे पे, क्योंकि संजू सैमसन, और मैं दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट कोई कैंपेन नहीं चला रहा हूं, मेरे मेरे पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों, रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपके सामने अपनी राय डालता हूं। और संजू सैमसन, जैसे कि मैंने कहा था, 19 अंतरराष्ट्रीय T20 पारी में इज एवरेजिंग 80, द स्ट्राइक रेट इज 130, but that's not the point. It took him 11 T20I innings from his debut to get to 39, the same score that Tilak Verma in his first match, पहला मैच में उन्होंने बनाया। उसके बाद तिलक वर्मा ने 50 बनाया। यानी कि इस कंपेटिटिव इंडियन क्रिकेट सेटअप में, जहां पे आपको 3-4 मैच ज्यादा नहीं मिलेंगे अगर आप सूर्य कुमार यादव नहीं हो, तो तिलक वर्मा हैज ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज। दुख है, अफसोस की बात है कि संजू सैमसन ने 18 अंतरराष्ट्रीय T20 पारी में अपने मौके नहीं पकड़े। और कल का डिसमिसल लीड मी टू बिलीव कि द टीम इज वेस्टिंग टाइम playing Sanju Samson in the T20I team. Now, do not get this confused with his one-day stats. His one-day average is 56 plus. The strike rate is 100 plus. इनको बहुत कम one-day matches दिए गए। one-day format में ये inconsistent नहीं है। ये पारियां खत्म करते हैं, ये मैच खत्म करते हैं अपने बल्ले से। I'm all for Sanju Samson being part of India's one-day plans. I think the 51 that he got in the one-day series, it underlines that fact. But जहां पे T20 बात हो, I think the Indian team should stop wasting time picking Sanju Samson. दूसरी बात, अगर कल एक बहुत नेगेटिव बात मुझे दिखाई पड़ी मैच से, वो है दोबारा लगातार 2 मैच के लिए
हार्दिक पांड्या नॉट हैविंग फेथ इन युजवेंद्र चहल। पहले मैच में जब चहल ने अपने पहले ओवर में दोस्तों 2 विकेट चटकाए वेस्ट इंडीज के, उस पहले T20I में हार्दिक पांड्या ने उनसे पूरे ओवर्स नहीं डलवाए, यानी कि उन्होंने चौथा ओवर नहीं फेंकाया युजवेंद्र चहल से। इट शॉक मी बैक देन। और कल के मैच में दोबारा हार्दिक पांड्या ने, जस्ट लाइक रोहित शर्मा हैज नॉट शोन द फेथ इन चहल इन प्लेइंग हिम इन व्हाइट बॉल क्रिकेट सिंस ही बिकेम कैप्टन, इट सीम्स दैट हार्दिक पांड्या बेशक उन्हें खिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को युजवेंद्र चहल में इतना भरोसा नहीं है। और कल दोस्तों मेरा यह मानना है कि 3 ओवर 19 रन 2 विकेट यानी कि 6.33 की इकोनॉमी से कल युजवेंद्र चहल ने गेंद डाली। ही वाज द मोस्ट एफिशिएंट, द लीस्ट एक्सपेंसिव इंडियन बॉलर यस्टरडेज मैच। लेकिन हार्दिक पांड्या ने सोचा कि भाई वेस्ट इंडीज जब 7-8 विकेट डाउन थे तो ही वेंट बैक टू पेस एंड द पेस प्रूव्ड इजियर फॉर अलजारी जोसेफ एंड अकील हुसैन टू हिट। मेरा यह मानना है कि अगर कप्तान, T20I के कप्तान जो अगले साल लीड करेंगे इस टीम को T20 वर्ल्ड कप में, अगर हार्दिक पांड्या अपने सबसे अनुभवी, सबसे सफल स्पिनर में यानी कि युजवेंद्र चहल में थोड़ा और भरोसा दिखाते तो जरूर वो मैच इंडिया जीत जाती। बिकॉज इट्स वेरी टफ टू हिट द स्पिनर्स। पेसर के सामने आप अगर 8-9 पे खेल रहे हो और अगर आपके पास डिसेंट टेक्निक है, आपके पास थोड़ी जान है, तो आप बॉल को गैप्स में प्लेस कर सकते हो और आप छोटी गेंद को या भारी गेंद को आप बाउंड्री तक मार सकते हो। और कल यही किया अकील हुसैन ने। लेकिन जिस तरह से युजवेंद्र चहल ने इन वेस्ट इंडीज के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को, टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लगातार 2 मैच में तकलीफ दी, मेरा यह मानना है कि अगर हार्दिक पांड्या भरोसा डालते चहल पे तो he could have won that match for you. So Sanju Samson's persistence, Sanju Samson's poor shot, overall India's limp batting, and Hardik Pandya's again for the second match in a row inability to find faith in Yuzvendra Chahal. ये दोस्तों जो आप मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं इस लाइव स्ट्रीम पर, brought to you by Dafa News, these are the main disappointments for me from yesterday's narrow 2 wicket loss to the West Indies in regards to Team India. अब दोस्तों आते हैं आपके कमेंट्स पे। जैसे मैं बात कर रहा था, आई वांट टू टेक अ फ्यू मिनट्स टू पुट माय पॉइंट्स अक्रॉस। अब मैं आपके आपके कमेंट्स पर पे आता हूं। देयर वाज अ कमेंट फ्रॉम बिफोर द स्ट्रीम, सॉरी, फ्रॉम पूरन बिष्ट सेइंग रॉन्ग मूव बाय हार्दिक। बिल्कुल इसी बात को लेकर मैंने बात किया। पूरन बिष्ट एपेक्स कह रहे गुड मॉर्निंग जय कृष्ण, गुड मॉर्निंग टू यू। आई थिंक हार्दिक ट्राई टू डू अ माही वे बाय टेकिंग गेम टू डीप, नॉट इन बैटिंग एंड bowling, but not giving what gel. I get your point where you're coming from, but we've seen evidence shows that MS Dhoni's tactic of taking things deep didn't always work. It worked in the initial years of his captaincy, but in the last 3-4 years of his captaincy, taking things deep didn't work out as much as people believe they did. So I believe if Hardik Pandya is trying that at this stage of his career, it's not the best time. You should have the faith that I can take things deep. But West Indies have been poor against, barring Nicholas Puran, the other batsmen have struggled. You know, they struggled against spinners in the test match. They struggle against Chahal, Kuldeep, especially in the one days. So I would have just gone to Chahal because you need to use your feet. You need to be smarter. Sometimes the ball comes slower. You basically, as a tail ender, you need to do a lot more to score runs against a Chahal as you would against a Mukesh. You can just stand there and use the pace. That's my point. हार्दिक भाई वापस आए। जय भाई, मुझे लगता है बिश्नोई का ओवर पूरन ने सारा प्रेशर वापस इंडियन बॉलर पर डाल दिया। बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर जहां चेल को देना था वहां नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम कह रहे हैं इस स्ट्रीम पर। Instead of Sanju, Yashasvi must get a chance in the next match. Bilkul, Ankur. I think the Samson, I'm not going to say experiment because it's been going on since 2015. Like I said, Sanju Samson, the T20I batsman, to my mind, is just not doing it. He's gotten 19 matches. It took him 11 T20Is to get to 39, which was the highest score that Tilak Verma got in his first match. In his second match, Tilak Verma got 51. It's clearly a case of a young batsman, and Sanju Samson was very young when he first got his chance in 2015. It's a chance of, in a very competitive, tough environment, grabbing the chances. Unfortunately, Sanju Samson in 19 T20Is has not grabbed the chance. No Nehra ji fun for Hardik, no Ahmedabad fun for Gill. बात तो सही है वैसे. Jay Krishnan says if Sanju didn't do well in this series in Ireland, I agree. I don't think he's even going to get a chance in Ireland. One day is different because one day he's got the stats. Like I said, मैं सिर्फ बात करता हूँ किसी प्लेयर को लेकर उनके परफॉर्मेंसेस, उनके आंकड़ों के बेसिस पर। इसीलिए दोस्तों, जब सूर्य कुमार यादव को 26 वनडे मैच दिए हैं और उन 26 वनडे में उनके पास केवल 250 हैं और 24 की एवरेज, आई एम सेइंग दैट्स अ बिग इनफ सैंपल साइज। क्या आप जानते हैं कि आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड ऐलान कर दिया? वर्ल्ड कप स्क्वाड। और मार्नस लाबुशेन, जिनके पास 30-31 मैच के बाद
केवल 31 की औसत है, लेकिन 650 और 100. Magnus Labuschagne averages 31. The Australian selector said this is not good enough. Magnus Labuschagne in 30 odd one days has a century and 650s. लेकिन क्यों उन्होंने उनको बाहर किया? और इंडिया अभी तक सूर्य कुमार यादव को 26 मैच के बाद, जहां उनकी बैटिंग औसत 24 है, केवल 250, क्यों वो टीम उन्हें बार बार खिला रही है? इसी बात पर दोस्तों दर्शाता है कि किलर इंस्टिंक्ट, विनिंग इंस्टिंक्ट किस टीम के पास है। इसलिए दोस्तों इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया. And this is why Australia, look at Marnus Labuschagne, who has 650s and 100 in 30 odd one day. They say, you know what? It's not good enough. That's how you win World Cups. और यहाँ इंडियन टीम क्या कर रही है? सूर्य कुमार यादव 26 वनडे मैच, 24 की औसत, ये इन्हें हर मैच में खिला रही है। और सूर्य कुमार यादव को हर वनडे मैच में खिलाकर, और जितने भी खराब हो रहे हैं, अब देखिए इनकी बैटिंग पे असर पड़ रहा है अब T20s में। ये वही सूर्य कुमार यादव है दोस्तों, इतना बड़ा फैन हूं मैं उनका T20s में। 1 महीने पहले वो इतनी कमाल, 2 महीने पहले आईपीएल में इतने कमाल के फॉर्म में थे ये T20s में, ठीक है। लेकिन इंडिया ने गलती करी उन्हें इतने वनडेज खिलाकर, और इतने खराब थे उन वनडेज में कि आजकल ये T20s में रन नहीं बना पा रहे। दिस इज a difference between a winning attitude and a flawed attitude, and I think that flawed attitude was very visible in Hardik Pandya's captaincy yesterday also. We picked top three from every IPL squad and retrofit them in India squad. Pele Tewatia, Rinku, Jitesh, Yasdul, Nihal Videra played good knocks at number 6, but the team didn't pick them. Rinku's there. Rinku did not make this series, but Rinku's in the Asian Games squad. Rinku's in the Ireland squad, and I believe Rinku will be part of most of India's T20I squads for the next few years. Because look, if Gill keeps batting like this, he's going to lose his place. If Ishan Kishan keeps batting like this, he's going to lose his place. I believe बेशक अगले मैच में यशस्वी जायसवाल दिखेंगे. If Sky keeps on struggling, they might put him back to 4. I think I have a lot of time for Sky, the T20I batsman, though. Look, Rahul Tewatia is basically known for a couple good innings. I frankly don't think he's good enough to play for India. Jitesh is in the next two squads. He'll get a chance. Yash Dul, I don't remember him doing anything. Nihal Videra is a good player. Nihal Videra is sort of behind these names. I think barring Yash Dul and Tewatia, Rinku, Jitesh, Nihal Vidara will probably play for India in the next couple years and consistently. क्या हुआ संजू? अरे वो कमेंट उड़ गया। क्या हुआ लप्पू सा खेलना उस पर? पता नहीं क्यों इतना अच्छा है वनडे में, इतना खराब है T20 में। सुबोध कह रहे हैं ईशान किशन नॉट सुटेबल, व्हाई दे कीप प्लेइंग हिम। सूर्य कुमार यादव किस आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं? ईशान किशन किस आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं? आप समझ सकते हैं मेरी बात को। गुड मॉर्निंग शिखर सिंह, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अक्षर इफ ही इज नॉट गोइंग टू बोल? आई डोंट नो। अक्षर पटेल दोस्तों, अगर आप इनके आंकड़े देखकर, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस लाइव स्ट्रीम के बाद क्रिक इन्फो पे जाके अक्षर पटेल के आंकड़े देखें। पिछले 15-18 महीने में इतनी बेहतरीन बैटिंग बॉलिंग उन्होंने करी है वनडेज में, T20s में, लेकिन इस सीरीज से क्या हासिल करना चाहती इंडियन टीम अक्षर से? इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये इनका करियर खराब करना चाहते हैं। वनडे में 4 पे बेचते हैं, बॉलिंग कम करते हैं। T20s में कभी यहां बेचते हैं, फिर बॉलिंग नहीं कराते हैं। पावर प्ले में कराते हैं, 2 ओवर में 22 उनको नहीं करते। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअल थिंकिंग एंड कैप्टनसी इज गोइंग ऑन हियर, यू नो। आप चहल को 3 ओवर दे रहे हैं, उन 3 ओवर में वो 2-2 विकेट निकाल रहे हैं। आप लगातार 2 मैच में उन्हें चौथा ओवर नहीं दे रहे हैं। आप यशस्वी जायसवाल को अब तक मौका नहीं दे रहे हो। आप मुकेश कुमार क्या कर रहा है T20 टीम में, ये मेरी समझ से बाहर है। और फिर आप अक्षर पटेल वाली बात भी आपने छेड़ दी। आई जस्ट थिंक इट्स वेरी वेरी कंफ्यूज थिंकिंग मेरे ख्याल से। हालांकि बहुत टाइम है, अभी 10-11 महीने हैं अगले साल के T20 वर्ल्ड कप तक, लेकिन फिलहाल ये 2 मैच में मुझे सोच में थोड़ी कमी लग रही है। Do you want change? Jaiswal? Yes, I want to see Jaiswal. Absolutely, Vivek. And I think Jaiswal will play. पूरन बिश कह रहे अक्षर पटेल को प्योर बैट्समैन खिलाना गलत है। बिल्कुल सही है, ही हैज वेरी गुड बॉलिंग कैपेबिलिटी, बिल्कुल। लेकिन जब आप उनका सही तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? आई थिंक हार्दिक पांड्या ऑलवेज फॉरगेट्स हिज प्लेयर्स एबिलिटीज एंड दे रिमेन अनयूटिलाइज्ड। वेल, देयर इज इनफ एविडेंस टू से yes. If Akshay cannot bowl to lefties, why they didn't select any offie? Team management knows West Indies main batsman lefties. I mean, I agree, Jay Krishnan. You raised a very very valid point. But who are the offies? There's just not enough good offies coming through. So who do you pick? एक सुशांत मेहता नाम का प्राणी क्यों
सुबोध, मैं बस यही कहूंगा कि क्योंकि सुशांत और मैं एक समय पर एक ही कंपनी के लिए काम करते थे। सुशांत वाज बेसिकली एन एंटरटेनमेंट रिपोर्टर, अ बॉलीवुड रिपोर्टर, बॉलीवुड के अच्छे शोज करता था, अच्छी एंकरिंग करता था। ये इसकी इसकी नॉलेज बहुत है फिल्मों को लेकर। फिर एक दिन जब वो उस कंपनी को छोड़ के गए, तो मुझे याद है कि जब विराट कोहली और अनुष्का की शादी हुई थी, तो ही वाज रिपोर्टिंग ऑन दैट एंड ही वाज रिपोर्टिंग ऑन अदर बिग इवेंट्स। आई थॉट दिस इज वेरी गुड बिकॉज़ ही ऑब्वियसली लव्स बॉलीवुड, ही हैज गुड कॉन्टैक्ट, ही इज अ गुड एंकर। फिर एक दिन मैंने देखा कि यार ये क्रिकेट पे बात कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको शौक होगा, मैं भी तो दोनों चीज में रुचि रखता हूँ, क्रिकेट में, बॉलीवुड में। बट देन आई सॉ हिम बिकम एन एक्सपर्ट, एंड आई सेड यार, जिस इंसान ने मतलब most of his journalistic career he was doing things about Bollywood, how is he suddenly a cricket expert? फिर मैंने दो तीन शोज देखे, तो मैं खुद समझ गया कि क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सुबोध, तुम्हारे इस सवाल में ही जवाब लिखा है। Yes, if it's, I have no doubt that Sanju will be dropped from the ODI 11 and they'll make the mistake of playing Ishan in the World Cup middle order. ये already मैं कह चुका हूँ, his dot ball count is too high. um, he hits great boundaries. he अगर आप इनकी बैटिंग देखें वनडे में, T20 में, तो बहुत टाइम तक ये फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। ईशान किशन को सिंगल रोटेट करना इतना अच्छा नहीं आता है, वो फंस जाते हैं। फिर अचानक एक ओवर में 15 आएगा, फिर एक ओवर में 12, और इनका स्कोर अच्छा है। बट दिस इज अ प्रॉब्लम विद ईशान किशन रोटेटिंग द स्ट्राइक। इज ईशान किशन सफरिंग फ्रॉम, कहाँ गया वो, मनी प्रेशर? नहीं, आई डोंट थिंक इज दैट। नहीं नहीं नहीं। Ravishankar is back. He's saying Australian cricketing culture is very strict. Their selectors are selected players on the basis of the big name. They drop their World Cup winner captain from World Cup. Absolutely, that's why Australia have won the most trophies across formats. Why so much obsession with MI players? आप बताइए, आप बताइए। जो कंपनी देश चला रही है, वो एक आईपीएल फ्रेंचाइज भी तो चला रही है दोस्तों। How good is Anuj Rawat? He's good enough, but he's good at the RCB level right now. जी, मैं इतना भरोसा ठीक नहीं इस टीम पे। यू सेड इंडिया विल टेक फॉरवर्ड, बिल्कुल। आई थॉट दिस टीम वुड डू मच बेटर, बट इट लुक्स लाइक वेल नाउ दे हैव टू विन द नेक्स्ट थ्री। अगेन, this should have been 5-0, but because Hardik Pandya did not bowl Chahal for his full quota, that's a big reason why India, especially yesterday's, had he bowled the fourth over yesterday from Chahal, because Chahal was the most effective, the most economical bowler. So I think had Hardik Pandya bowled Chahal in both the overs, definitely the score would not have been 2-0 West Indies. And then the batting, I mean, Shubman Gill has been terrible, Ishan Kishan has been terrible, Sky has been terrible, Samsu's been terrible. The only real batsman who's put his hand up has been Tilak Verma. So if you're, और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लगातार दो मैच में अगर आप चार बॉलर्स खिलाएंगे, यानी कि आपका टेल बहुत लंबा है, तो I definitely feel that India should have won this series 4-1. I think had Roston Chase played the first match, maybe West Indies would have won that match easier because India struggled against spin. But India are down 2-0 because of the main players, Hardik, Surya, Ishan Kishan, Shubman Gill, just not scoring enough runs, and Hardik Pandya's poor captaincy. Otherwise, it could have been 5-0 to India or 4-1. But nahi hai, good for West Indies. Whoever wins between West Indies and India, Hardik Pandya will be very happy. No, I don't think so. सर, पूरन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अरे पूरन ने कल कर दिया इंडियन बॉलर्स का चूरन भैया। I'm very very glad because I've been very critical of him when he's been so inconsistent, but the way he's batting since coming back, that 100 he got for that Mumbai New York franchise, बेहतरीन पारी। ऐसी पारियां ना, अगर आप बॉलिंग वाली टीम हो, तो आपकी आपकी जो एक मोरल है, वो एक ओवर के अंदर डाउन हो जाता है। भैया, वी डोंट हैव बैटर्स हु बोल। हाँ हाँ मनीष भैया, ये तो हम बहुत 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 बार इस चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं। अहमदाबाद का प्रिंस है गिल। देखते हैं फिर अक्टूबर 14 को क्या होगा। अतुल पावर, जेई ऑस्ट्रेलिया इज नॉट सेलेक्टेड लाबुशेन एंड जय रिचसन, दे मेड मार्श। बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने लाबुशेन को बाहर किया, और यहाँ इंडिया सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को बार बार मौका दे रही है। Yes, Anup, not giving Chahal. Bilkul, you're right. West Indies is a strong team. They've not been that strong, but they're showing their strength against India. What do you think of Rohit's statement about T20? हाँ, कल के लाइव स्ट्रीम के बाद जब मुझे रविशंकर ने बताया, तो I went and googled. See, you have to understand, Rohit Sharma is sitting in the US where he's launched an academy. So he's going to say these things, but there's no chance of Rohit Sharma playing next year's T20 because Rohit Sharma himself and Virat Kohli had a word with the selectors, and I've heard this from well-placed sources.
कि हमें अब T20 में सिलेक्ट मत करना, आपको एक नई दिशा में जाना पड़ेगा, आपको नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे. So a lot of people are saying, yeah, Rohit's going to play next year. No, Rohit Sharma never said that. Rohit Sharma will just said it will be good to come back to America to see next year's T20 World Cup. इसने कभी ये नहीं कहा कि मैं खेलूंगा. Or you have to understand, he's sitting in America promoting his own product. If he doesn't praise America and doesn't say कि मैं आऊंगा, तो फिर वो product fail है. If you read between the lines, ऐसा कुछ नहीं है जहां पे किसी को गलतफहमी होना चाहिए कि रोहित शर्मा अगले साल के T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे. Washington Sundar is enough. Exactly. So Shikhar bhai, Washington Sundar just came back from a long injury. He's just taking his first steps back. He's going to Ireland. He's going to the Asian Games. This tour, it was too close for the selectors because they didn't have enough evidence. उन्होंने 2-3 TNPL मैच खेले और फिर दुलीप ट्रॉफी खेला. He's definitely going to be there. But for that, unfortunately, every 5 matches, Washington Sundar ends up getting injured. If he stays free, he's very young. I believe he's got 10, 12 years easily. But right now, he's because he was not fully fit, the selectors didn't pick him. Arshdeep came in Indian team as a death bowler after playing internationally. He became a power play bowler. बताइए यार ये सोच थी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और राहुल द्रविड़ की. Arshdeep Singh is best left arm pace Indian right now, but they play Unadkat and ODIs. बिल्कुल भाई, इतनी बार इसी बात को लेकर मैंने सवाल उठाया कि क्यों नहीं खिलाते इस बंदे को वनडेज में. Mukesh Bhatt posted, do you think Hardik is a good captain? I think he's better than Rohit Sharma, but right now we're saying when you don't have faith. Look, you talk about Rohit Sharma, he doesn't even have faith to play Chahal, you know. Hardik Pandya has the faith to play Chahal, but then you're not bowling him his fourth over. What's the point? The guy's played so many T20s, so many wickets, and against a team which struggles against spin, with the exception of Nicholas Puran, like we saw in 2 matches, why didn't Hardik Pandya bowl Chahal for the fourth over in both matches? Had he done that, you probably would have been 2-0 up instead of 2-0 down. Vinod Kaka, we should be mentally prepare ourselves to see fall of Indian cricket like what South Africa, West Indies, Sri Lanka went through. Harsh words, but yes, आपकी बात में थोड़ी सच्चाई है. I think we should all brace for some bad years ahead. But one day World Cup में मुझे अभी तक पता नहीं क्यों. Again, I've always been proven always क्या. I've often been proven wrong, not always. I've often been proven wrong in my prediction. I still am not losing faith in the one day World Cup. लेकिन हाँ T20 में मैं तो बहुत महीने से कह रहा हूँ कि ये T20 टीम बहुत टूटी फूटी है और टेस्ट टीम तो भैया सबसे वाहियात सिचुएशन में. अगेन नंबर 1 रैंक T20I टीम कौन है आज के दिन में? इंडिया. पिछले 2 मैच में आपने एक भी ऐसा प्लेयर देखा, एक भी ऐसी परफॉर्मेंस देखा जो दर्शाता है कि इंडिया नंबर 1 है T20 में. So rankings are a joke, I'll say it again. Don't be shocked if Gill is playing in middle order in Asia Cup. Nothing would shock me because, exactly like you said, Rahul Dravid. I don't know. Breaking news, Steve Smith and David Warner will be opening batter of Australian team for T20I World Cup 2024. ये खबर कहाँ से आ रही है? ऐसा कुछ खबर आई थी क्या? I thought David Warner was done from T20s. Let me just check out the latest T20I squad here. अरे रविशंकर मजाक कर रहे हो. मैं तो मैंने कहा यार इनके नाम तो मैंने देखे नहीं. अच्छा मजाक करते हो रविशंकर. As Virat made peace with the fact that he's not going to win. Shikhar Singh, that's why I've been told that both he and Rohit told the selectors, "Okay, don't pick us." So they made that decision after failing last year, both in the T20I Asia Cup and the T20I T20 World Cup as senior figures. They both knew कि हमारा time आ चुका है. Every cricket team has different play style, just like football. India had low boundary count, but used to compensate with single doubles that used to work. Blindly aping other team led to bad results. Yeah, that's a pretty fair analysis, Ashutosh. Just like I've been saying, India should not try and ape any baseball technique. Do what works, but mushkil hai when you try to copy. These are all young, explosive players are flat track. Even Sky is flat track. No, Sky has got hundreds in England. Sky has got hundreds in New Zealand. But हाँ क्या है कि जब आप ज्यादातर अपनी क्रिकेट खेलते हो पाटा विकेट्स पर, I think Shubman Gill is an example of that. But that said, he does have runs in Australia. वही है कि यार मैं ज्यादातर ना सुबोध में ओवरऑल आंकड़ों को देखता हूं. ठीक है, अब T20 में स्काई ने हर कंडीशन में हर देश में जाकर उसने रन मारा. तो अब 2 मैच अगर ये यहाँ नहीं चले तो मेरा ये मानना है वो गलती उनकी सिर्फ नहीं है,
क्योंकि उनको इतने वनडे मैचेस में खिलाए, और जितना भी आप एक फॉर्मेट खेल रहे हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका रन ऑफ इफेक्ट दूसरे फॉर्मेट में आएगा. तो इट्स बिकॉज इंडिया हैव मेड द मिस्टेक of playing so many one days with Sky. They're now starting to ruin his T20I batting. So that's a problem. Is Visay under pressure to take players to Mumbai? I don't think they're under pressure at all. But obviously, they're seeing a certain trend and they're not doing anything. So you read it on? No, no. I just went to Cricket Australia's official website, and there's no such news. Steve Smith and David Warner are not even part of the next two T20I squads. So I don't see them going next year. And I don't think so. Jaiswal will be a great captain. He's hungry and very assured. My prediction hasn't been wrong on captains. Look, Jaiswal is still early days. I think he'll get his debut in T20Is in the third match. And if he keeps on, look, you keep on scoring runs, it's inevitable that the team will look to you to lead. So let's hope it happens. My sister narrated an incident from Australia, says Atul, where her friend scored two goals in a football match with the coach who was not happy because she failed as midfielder. In the end, they conceded five goals. There you go. One of the greatest sporting nations I've had the privilege of going to and covering sports is Australia. और जैसे कि मैंने कहा था, उनकी डीएनए में स्पोर्ट है. अनफॉर्चुनेटली हमारे डीएनए में नहीं है वो स्पोर्टिंग कल्चर. But Australia, that's why they've been the most successful team. And unfortunately, India doesn't come anywhere near them because हम लोग अक्सर सोच में ही मार खा जाते हैं. Sad. I wish Indian cricket gets complete revamp after this World Cup, like how England got their exit from 2015 World Cup. Bilkul, I was there in 2015. I covered three of England's matches in the World Cup, and that match when they put up 300 plus in Wellington at the Westpac Stadium, and then Sangakkara and Upul Taranga chased it down with hundreds. That match, Owen Morgan looked broken, but they learned from their mistakes. They reset their one-day team. They dropped Anderson, Broad, Bell, Cook, a couple others. They went for youth, and then the next year they got to the T20I World Cup final at Eden Gardens. I was there for that match, but someone called Carlos Brathwaite ruined their hopes. But then they rose up the rankings. They changed the one-day game, and they won the World Cup. And then they won. They're currently World Cup champions and T20 World Cup champions. So you need to go through a low. And I think India, if they've not learned from the lows of 15 and 19, then I don't think, I don't know. I still will not write this team off because it's a home World Cup. पर अभी तीनों फॉर्मेट में काफी खराब चल रही है टीम. Robin on com said yesterday, कौन से Robin? Uttapa, okay. That Indian should be allowed to play in CPL, which I think is registered. Yeah, look, I think Indian players, if they want to, and if they can afford to skip matches, they should play. क्योंकि आपका क्रिकेट ओवरऑल तब डेवलप होगा जब आप अलग अलग कंडीशंस में और आजकल के टाइम में अलग लीग्स में आप क्रिकेट खेलोगे. अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलोगे, जैसे कि सुबोध ने कहा, पाटा विकेट्स पर, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी ट्रैक्स पर आप कैसे सफल होंगे? आप साउथ अफ्रीका में कैसे सफल होंगे? सो I agree. I think they should be allowed to play in the BBL as well, but ये होगा नहीं. Who should be dropped to accommodate Yashasvi? Sanju Samson, most likely. But if you're going to play Akshar, not bowl him, then drop Akshar. Welcome back, Shanawaz bhai. I think West Indies plays a team, and I don't agree with you. That's a Faltu team. I said Faltu because their test team. I've always said the test team is still decent. It's because they failed. They've been poor in one days for a long time. They failed to qualify for the World Cup this year, and their recent T20 matches, I saw enough evidence to realize कि यार अभी इनमें वो बात नहीं है जो शायद 2016-17 तक था. 2000 पिछले T20 वर्ल्ड कप में वो टीम, it was an all-time disaster. They didn't even get to the next round. उससे पहले they barely qualified for the 2019 World Cup. वहां पे खराब थे. तो जब मैंने कहा था कि ये फालतू टीम है, ये मैं 4-5 साल कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट में इनके रिजल्ट्स देखकर मैंने ये कहा था. बट आप लेट आए इस स्ट्रीम में, कुछ 15-20 मिनट मैंने कहा था कि मैं गलत था, और गलत होना बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि फिर आपको दोबारा सोचना पड़ता है कि भाई मैंने ऐसा क्यों कहा. लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल को दोनों मैच में चौथा ओवर डलवाते तो अभी इंडिया 2-0 जीतती, और हम सभी कहते होंगे कि भाई ये वेस्ट इंडीज कितनी फालतू टीम है. तो थोड़ा read between the lines, my friend Shanawaz. Yes, Jay Krishnan, Yashasvi should play. हार्दिक पांड्या की बैटिंग बहुत बड़ी. बिल्कुल, एक टाइम था जब बॉलिंग कंसर्न था, बैटिंग नहीं. अब बैटिंग कंसर्न है, बॉलिंग. बट अगेन, it's just 2 matches. I would still keep some faith in Hardik Pandya. Maybe he should go back to batting at 6.
I know. Why not Jaiswal given a chance like Samson? Look, Jaiswal का time आएगा. मेरा ये मानना है कि third match में he will get his chance. And I think because the team has to look forward. And if you're playing Sanju Samson, who in 19 T20Is averages only 18 with 150, it's time to drop Samson from T20Is and play Tilak Verma's, Rinku Singh's, Sai Sudarshan, Jaiswal. It's time to drop underperforming senior players and play youngsters. That's the fact. They should try pair of Jaiswal and Gill next match. Sanju shouldn't play lower than four. I don't think Sanju would play any more T20Is. Tilak plays. No, Tilak bats four as well. Four again. 4-5 is fine. Right now, I think don't change him because he's done so well in two matches. Keep him going for four. Chaliye, last couple questions. Shikhar keh rahe हैं, what happened to India A and 19 Tour of Oz? They don't tour as much anymore. Khaskar the A team doesn't tour. And like we've discussed on many shows, that's also a problem for India's current predicament. Ankur Agarwal, they consider Akshar as like for Jaddu, and then they play him as a batsman. I agree. Very strange. You play him in the wrong position, then you don't bowl him. Very strange. Anuj Mathur, will Rishabh Pant be for the World Cup? No. Rishabh Pant will come back in the Ranji Trophy in January, and based on how he does in the Ranji Trophy, he might make the England Test series in Feb next year. Paul Arnab, lack of batting depth hurts India in limited overs future. Don't see any fix for that in the near future, but we need five multi-unity. बिल्कुल I agree with you. I agree with you. ये ट्रांजिशन कब तक चलेगा भाई जब तक कोई टीम कोई ट्रॉफी नहीं लेके आएगा. Check for cricket news. Okay, I'm just going to Google George Bailey right now, my friend. George Bailey, George Bailey, George Bailey, George Bailey. Uh, okay, I found an India Today story where George Bailey. He's talking about Pat Cummins being injured. He may miss the test series, the one-day series. I'm reading a news about George Bailey Ravi Shankar. There's not one mention of David Warner or Steve Smith. If you can find that link, please ping it because I see no mention. If Steve Smith and David Warner are not in India or not in Australia's next two T20I squads, how can you say? I see no news. I've just Googled George Bailey, Steve Smith, David Warner. I've got no such thing, Ravi Shankar. Please paste the link here. चलिए लास्ट क्वेश्चन सुशांत मेहता में और पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ फर्क नहीं है. No comment, dosto. No comment. Chaliye, it's been half an hour. Love you all. I'm gonna put up a quick review video of yesterday's match. As always, do like, do share, do subscribe. Thank you for joining. Thank you for your questions. I hope मैंने हर इंसान, हर साथी, हर व्यक्ति का सवाल का जवाब दिया. नहीं किया तो sorry. And Ravi Shankar, if you're watching, please paste that link here so I can come back in a couple hours and look for that link. I cannot see any link, and I can see that Steve Smith and David Warner are not part of Australia's next two T20I side. ठीक है. Love you all. Have a great Monday. मिलते हैं आपसे कल.